is equals to integral 0 to t f of u g of t minus u du. What is this one? This is a statement. Okay, Sania, can you hear me now? Hello? Yes, sir, we can hear. Yes. So I repeat once again the statement. If Laplace inverse of f bar of s is equal to f of t and Laplace inverse of g bar of s is equal to g of t, means we have to take the two functions where the Laplace transform is known, and then their product we can find out by using this formula 0 to t f of u g of t minus u du. Minus human. Okay, to understand this formula we have to do one question. A simple question we can start first of all. Evaluate Laplace inverse of 1 by s into s minus 1 using Convolution theorem. convolution theorem. Using convolution theorem. Second, this is the problem. Now look at solution. We are going to find out Laplace inverse for this function. So in this one, there are actually two functions are here. Let us assume that the first function is taken as f bar of s is equal to 1 by s, 1 by s of s g minus bar of 1. s is equal to 1 by s minus. Like that, we have two different functions. Taking Laplace inverse on both sides. Laplace inverse of f bar of s is equal to Laplace inverse of 1 by s. And similarly, if you take Laplace inverse of g bar of s is equals to Laplace inverse of 1 by s minus 1. Okay. Then now look at what is the value of Laplace inverse of 1 by s. This one you should know. अगर आपको Laplace transform का आंसर मालूम है, then only you can solve this. Otherwise, ये आपको फिर नहीं होता, confusion होता. What is the answer? What? Come on. नहीं ऐसा रहे तो फिर क्लास नहीं होती थी, तो मैं करके देंगे कैसा होता. This is already given in our question. It is f of t. This is Laplace inverse of 1 by s is equal to 1. This is, you can see it is g of t 1. that is equal to e power at. A value is 1, so e power t only. So g of t if you got, then from this g of t we can easily find out f of u. That is equal to 1 only. And g of t minus u. G of t minus u means e to the power of t minus u. Okay. Then we have to write here. What we have to write? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir, समझ में आ रहा हूँ. Look at next step when we are going to take by convolution theorem. Convolution theorem. Convolution theorem. We have to write their statement. Laplace inverse of f bar of s into
G bar of S equals to integral 0 to T f of u into G of T minus u du. Okay, it is equal to Laplace inverse of f bar of s value is 1 by s and g bar of s value is 1 by s minus 1. So 1 by s into 1 by s minus 1. That is equal to integral 0 to t. F of u value is 1. If you are not writing also, no problem. Next step we can neglect. G of t minus u value is e power t minus u. We can write it as e power t into e power minus u. Okay. So what we are doing integration with respect to u. With respect to u means what is the constant term? What is the constant term? E power t is a constant term, no? Because integration with respect to u. Okay. Give me the answer. See, if you give me the answer, then only I can explain the next step. Yes, sir. खाली सब मेरे Yes, ऊपर sir. डिपेंड करके आप सर कर लेते पूरा बोलता हूँ बट पॉसिबल. Okay. Yes, E power T is So e power t is a common. constant term that we have to take outside. Okay. One is a constant anyhow. This is equals to e to the power of t will be outside. Integration 0 to t e power minus u du, which is equal to e to the power of t will be e power t only. E power u minus u integration e power minus u by u coefficient is minus 1 and their limits are 0 to t. 0 to t. So then minus will be outside, minus e power t. Upper limit is e power. In place of u, if you put upper limit is minus t. Minus e power 0 is 1. So that is equal to, you can see if you multiply, bases are equal, power should be added, plus t minus t again, 0. E power 0 is 1. Minus into minus plus e power t. That finally I can also write it as e power t minus 1. हो गया इसका आंसर सब खत्म. अब एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, यही प्रॉब्लम है फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पस. अगर ये क्वेश्चन को खाली इवाल्युएट दिया तो इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं एंड आई कैन शो यू द आंसर विल बी सेम. बताऊं मैं वैसा भी? Yes, sir. ठीक. देखिए आपको कॉन्फिडेंट भी आ जाता कि भाई हम दो भी मेथड से करें एंड वी गॉट द सेम आंसर. द क्वेश्चन विल बी, सानिया कैन यू गिव मी द आंसर? इफ यू गिव मी द आंसर आई कैन से Yes, sir. दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ रहा मतलब यू हैव टू गिव मी ए रिप्लाई. सेम क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे? Yes, sir. Okay. पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे एंड आई कैन शो यू द सेम आंसर. नाउ लुक एट. Okay, sir. When we are doing with partial fraction, consider 1 by s into s minus 1. That is equal to, there are two factors in the denominator. A by first variable is s plus b by second variable is s minus 1. This is equal to 1 by s into s minus 1. It is equal to s into s minus 1, a into s minus 1 plus bs. This denominator will be cancelled here. 1 is equal to, मुस्तफा समझ में आ रहा? A. Plus bs. Yes, sir. Now look at, if you put here s is equal to 0, what happened? A switch off method. S is equal to 0 means b will become 0. We will get the value of a here.
S0 means my A into minus 1, minus bring that side. You can easily get A value is minus 1 here. Is it correct? In a similar way, if you put S is equal to 1, here in this above equation number 1, S is equal to 1, 1 minus 1, 0, you'll get B value. Or how much B value you will get? 1. Very good. After getting A and B, we put here 1 by S into S minus 1. A is minus 1 by Is S equal plus B value is 1 by S minus. Then if you take Laplace inverse on both sides, Laplace inverse of 1 by S into S minus 1 S is equal is to equals to minus outside Laplace inverse of 1 by S plus Laplace plus inverse of 1 by Laplace in S minus 1, S minus 1. which is equal to, this is 1 by S का 1 हो जाता तो ये minus 1 plus e power t. पिछले वाला आंसर देखो, e power t minus 1. अब ये आंसर देखो minus 1 plus e power, दोनों सेम है. Yes. So it means one question can be solved by using different methods also. आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, बट अगर एग्जाम में बोला कि उन्हें कॉन्वोल्यूशन से करिए, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन तो नहीं है, कॉन्वोल्यूशन से ही करिए. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, अभी कॉन्सेप्ट मिल गया ना आपको. Yes. चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. Using convolution theorem, show that Laplace inverse of S by S square plus A square whole square is equals to T by 2A sin 80. ये बाद में फार्मूला बन जाता है sin 80. Okay, later on this will become a formula. Now solution I am doing. Solution. Now look at, it is given to use the convolution theorem, so we use convolution only. Let us assume that first value will be taken as f bar of s. क्या लेते हैं आप बोलिए, आपका मर्जी. आप s फर्स्ट टर्म को भी रख सकते हैं, सेकंड टर्म को भी रख सकते हैं, आपका मर्जी. तो आई विल बी टेकिंग लाइक दिस 1 by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक टर्म ले ले रहा हूँ मैं, कॉमा g bar of s आई एम टेकिंग एज, कैन यू टेल मी क्या लेना होगा मेरे को यहाँ पर? S by S square plus S square. ओके, तो ये डिनोमिनेटर का जो होल स्क्वायर है, एक टर्म इधर चले गया, एक टर्म इधर चले गया. एस आप चाहे तो इसको दे सकते हैं या उसको दे सकते हैं, आपका मर्जी. चॉइस इज योर्स. नाउ टेकिंग लैपलेस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. लैपलेस इनवर्स ऑफ f bar of s is equals to Laplace inverse of 1 by s square plus a square. This is equal to f of t according to the statement of convolution theorem. This is equal to 1 by a sin 80. sin 80. Similarly, if you apply here Laplace inverse, g bar of s is equal to Laplace inverse of s by s square plus a square. This is g of t here is equal Cos 80. to cos 80.
So after getting f of t value, we can easily find out f of u value. This is 1 by a sine a u. Here we can easily find out g of t minus u, which is our main requirement. That is cos of a into t minus u. Later on, we can multiply with a also. A t minus a u we लिख सकते हैं h. Now we can go for the next page for simplifying this one. Okay. Now look at क्या लिखेंगे यहाँ पर by convolution theorem Laplace inverse of h bar of s into g bar of s is equal to integral 0 to p f of u g of Mustafa, no, not allowed. आप कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर. गलती से गया था, सॉरी. Laplace inverse of f bar of s we are taking 1 by and g bar of s will be taken s by, so together becomes s by s square plus a square whole square is equal to integral 0 to t f of u की वैल्यू यहाँ देखिए आप पीछे 1 by a sin a u 1 by a outside sin a u and then cos of a t minus a u भी लिख दे रहा हूँ. ओके सो एक काम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करें तो 2 sin a cos b का फार्मूला मुस्तफा बोलते बोलो मुस्तफा. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 sin a cos b क्या होता है मुस्तफा साइन ऑफ a plus b A plus B, plus sin of A minus B. a minus b sin a cos b plus cos a sin b sin a cos b minus cos a sin b. So बराबर है. So that formula we have to use. We are assuming our a value is this one a u, or we are taking this complete value is b value. Then put it in your formula. This is 1 by 2a. Okay. Now integration we have not done yet. We have to do it. That is 0 to t as it is. Now instead of writing this one, we should write their formula. इसका simplified form बोल सकते हैं formula के बदल में sin of a plus b au plus at minus au ये हो गया plus plus sin of sin au sin of minus से ये दोनों वाले minus at minus into minus plus and then d. au. Correct? Yes. And what happened? How Yes, many sir. values are cancelled? This one and this one cancelled. Yes. This is 1 by 2a integral 0 to t. We have not performed the integration. Sin at. Sin it. एक काम कर सकते देखिए
साइन 80 मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू यू है, साइन 80 कांस्टेंट होता। अब बाहर चाहे नहीं एक काम करने के लिए साइन 80 को बाहर ही रख देंगे, 0 to t, एक स्टेप बच जाता आप 1 du Integration प्लस U. साइन, ये भी इंटीग्रेशन In- को अप्लाई करेंगे, 0 to t साइन ऑफ 80 plus 80 is 280, not 2au, 2ab 2AU minus 80 इसको भी du कर देंगे। into D. ये ब्रैकेट क्लोज का बोलते 1/2 आउटसाइड है, दिस इज 1/2a साइन 80 Sin 1 80 du, 1 du is u between the limits 0 to t प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2au 2AU माइनस 80 minus और विथ रेस्पेक्ट टू u 0 कर रहे to हैं, T. u का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2a है, वो भूलना नहीं है। 2a अब लिखना है लिमिट्स आर 0 to t, 0 to t ठीक है ना। अब इसमें देखिए u की प्लेस पे अपर लिमिट t लगाएंगे और लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैन यू टेल मी? t sin 80 यस, Sin 80 square. मैं इस निकाल लूँ। उन्हें मैं छुपाओ खाली बातें नो लुक इट 1/2a will be Laplace inverse of s by s square plus a square whole square value we are finding b equals to, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट इज t sin 80, तो देखो ऐसा करेंगे 1/2a, ये हो जाता t sin 80, ठीक है। ये अपर लिमिट t, लोअर लिमिट तो 0 है, ये माइनस 1/2a आउटसाइड, फिर से अपर लिमिट लगाना है u की प्लेस पे t, सो इट इज बिकम्स cos 80 280 माइनस 80, ये हो गया अपर 80 लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos, लुक एट u की प्लेस पे 0, तो ये पूरा 0, ये cos ऑफ माइनस 80, ये क्लोज, ये क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू t sin 80/2a माइनस 1/2a इंटू cos 280 माइनस 80 कितना हो जाएगा, cos 80 cos 80 हो जाएगा। ये cos ऑफ माइनस minus थीटा है, cos देखिए 80 cos ऑफ माइनस cos थीटा theta cos थीटा ओनली माइनस cos 80, cancel these two are cancelled, 0 into anything is 0. Finally what answer we got? Laplace inverse of s by s square plus a square whole square t sin 80 by 2a, that we will be required our result, यही आपको प्रूव करना था, ये आ गया आपका प्रूफ। इसी तरह से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा पूछा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता हो, s by s square plus 25 होल स्क्वायर, इसको नहीं देखे अगर इसको पूछा क्वेश्चन, ये इवाल्युएट करो बोला, तो आपको पूरा ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा है वैसे ही करके इसका आंसर कैसा लिखना देखो, t sin, 5t इफ यू कंपेयर a वैल्यू इज 5 ना, 5 स्क्वायर इज 25 होता ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं t 5 sin 5t by 10 ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में किसका भी वैल्यू पूछ सकता हूँ, अब ये इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूरा प्रोसेस करके सिंपल ऐसा लिख देना, पुट
a इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख दिया तो पता। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे एक मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, या फिर एक छोटा क्वेश्चन अगर मिला तो मैं खुद कराता हूँ, फिर रुकिए। कन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता, पक्का आता, ऐसा नहीं है कि 0 चांसेस, 10%, 20% नहीं। कन्वोल्यूशन और एप्लीकेशन में से क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली पूछता होगा। ओके सर। नहीं तो एप्लीकेशन में से एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता, तो अपन उसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, यस सर। अपने डिटेल में करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देता हूँ और उसके साथ थोड़ा हिंट देता हूँ मैं आपको, आप लोग इसको करेंगे। ये फोटो ले लेना। फोटो नहीं, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ, डोंट वरी। मैं इसका ठीक है। पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके साथ इसका थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, आपको जो भी क्लास होती है ना उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलती है आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसके साथ इसका हिंट भी देता हूँ करने के लिए कैसा करना है आपको। Look at the question. We have to solve this one also by using convolution only. Laplace inverse of s square by s square plus a square. आप लोग इसको ट्राई करके सेंड करिए सोल्यूशन इसको मेरे पास, अदरवाइज आपको नया है सपोज, तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में मतलब कल की क्लास में इसका भी सोल्यूशन कराता हूँ। कन्वोल्यूशन कम से कम 2 क्लास में तो करना चाहिए, तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, वहां से आप लोगों को लेना है। लेट अस टेक f bar of s इज इक्वल टू, क्या लेते हैं आप, f bar of s इज इक्वल टू s by, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। very good, s square plus a square. And what about g bar of s? You will take एस बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को बराबर s डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, s यस। square plus b square. Then taking both side Laplace inverse, इसकी वैल्यू cos 80 हो जाती, इसकी वैल्यू cos bt हो जाती, पॉसिबिलिटी। और cos bt होने के बाद f of t cos 80 हो जाता है, f of u cos au आ जाता, और g of t minus u की वैल्यू cos b into t minus u, तो यू गेट टू टर्म्स cos टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करके 2 cos a cos b फॉर्म में, यानी cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ, जो उसका रिलेटेड फार्मूला है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 cos a cos b से ये सॉल्व हो रहा है, 2 cos a cos b से, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एग्जैक्टली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, इससे ये सॉल्व हो जाता। इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को, फाइनली जिसका जो आंसर है, ये आंसर आपको अगर मैच हो गया तो वेल एंड गुड, आपको समझ लीजिए कि ये आ गया a sin 80 माइनस b sin bt बाई a square minus b square इसका आंसर है। So try this question and send it to me. If you can get the correct answer, then well and good. Otherwise, for the next session in online class, I will solve this and I will do it some more questions in the convolution theorem. और उसके बाद में फिर कभी भी convolution theorem का रिवीजन नहीं होता, convolution theorem अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। We'll end up the class.